Hello everyone. So in the last lecture we have discussed how we can evaluate convolution of two signals. Okay. In the continuation of that we will start today two more signal convolution. So we are given one signal x of t which is equals to e to the power minus at ut, and another signal is h of t which is equals to ut, and we have to find out output y of t which will be the convolution of two signal x of t and h of t. So first of all we will plot the two signals. Suppose this is our x of tau, because in convolution integral formula we have x of tau. So x of tau is e to the power minus 8 tau. So this one is e to the power minus 8 tau u of tau. Then the next signal we are given is h of tau, which is unit step signal. So this is h of tau, which is u of tau. Now the first step is to reverse the h of tau. h of tau को हम लोग रिवर्स कर देंगे. So h of tau को रिवर्स करने के बाद we will obtain h of minus tau. So h of minus tau will be this one. ठीक है, उसके बाद मैं h of minus tau को लेफ्ट शिफ्ट करूंगा और राइट शिफ्ट करूंगा, एंड वी विल सी कि लेफ्ट शिफ्ट करने पर कितना एरिया मेरा ओवरलैप करता है x of tau से, और राइट शिफ्ट करने पर मेरा कितना एरिया ओवरलैप करता है x of tau से. So first of all, now we have shifted h of minus tau to the left by 1 unit. So the waveform will start from here now. This is h of minus 1 minus tau. ठीक है, तो ओवरलैप रीजन अगर मैं देखूं इसका, ये मेरा x of tau था, this one is x of tau, and then we have h of minus 1 minus tau. This one is h of minus 1 minus tau, and the overlap region between x of tau and h of minus 1 minus tau is 0. So in this case there is no overlapping, of x of tau and h of minus 1 minus tau. तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं x of tau into h of t minus tau, so in this case we can say that value of t is 1 or value of t is minus 1. So in case t equals to minus 1, there is no overlapping region. Similarly अगर मैं इसको और शिफ्ट करूंगा, अगर मैं t की वैल्यू माइनस 2 करूंगा, तब भी मेरा कोई ओवरलैपिंग रीजन नहीं आएगा. So we can say that y of t, which is equal to minus infinity to infinity x of tau into h of t minus tau d tau will be equal to 0 for t less than 0, because there is no overlapping region between x of tau and h of t minus tau. So y of t equals to 0 for t less than 0. Now we will shift our h of tau to h of minus tau to the right. This is my h of minus tau, h of minus tau. Now I have shifted my h of minus tau to the
1 यूनिट टू द राइट। अब 1 यूनिट मैंने इसको राइट शिफ्ट कर दिया। सो दिस इज 0 to 1 now, and this can be represented as h of 1 minus tau और माइनस टाउ प्लस 1। तो अगर मैं इसका ओवरलैपिंग रीजन देखूं, तो इसका ओवरलैपिंग रीजन x ऑफ टाउ मेरा ये था, एंड h of 1 minus tau is this one. So the overlapping region is here. तो ओवरलैपिंग रीजन जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा 0 to 1. This one is x of tau into h of 1 minus tau, and when we'll compare it with x of tau into h of t minus tau, so we can say that value of t equals to 1 in this case. ठीक है, t की वैल्यू मेरी 1 हो गई इस केस में। if t equals to 1, overlapping region is 0 to 1। ठीक है, अगर मैं h of minus 2 minus tau प्लॉट करूं, then h of 2 minus tau will be like this one, h of 2 minus tau। उस केस में मेरा ओवरलैपिंग रीजन जो आएगा वो आएगा 0 से 2 तक। This is my x of tau, then h of 2 minus tau, now this is overlapping region and it is from 0 to 2. This one is x of tau into h of 2 minus tau। तो यहाँ पर t की वैल्यू मेरी 2 है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं x of tau into h of t minus tau से, तो यहाँ पर मेरी t की वैल्यू 2 है, and if the value of t equals to 2, then overlapping region is from 0 to 2। ठीक है, तो मैं जितना शिफ्ट करता जाऊंगा राइट पर, जितना शिफ्ट करता रहूंगा राइट पर, उतना ही मेरा रीजन ओवरलैप होता रहेगा। सो वी कैन से व्हेन t विल बी ग्रेटर देन 0, t की वैल्यू 1 थी तो मेरा ओवरलैपिंग रीजन आया 0 to 1, t की वैल्यू 2 थी तो ओवरलैपिंग रीजन आया 0 to 2। so we can say that y of t will be equal to 0 to t। जितना मैं शिफ्ट करूंगा उतना ही रीजन मेरा ओवरलैप होगा। दिस इज x of tau into h of t minus tau d tau। यहाँ से हम निकालेंगे y of t की वैल्यू which will be 0 to t, x of tau, value of x of tau is e to the power minus a, e to the power minus a tau, h of t minus tau value is 1 into d tau। So when we'll integrate this and putting the limit from 0 to t, we'll obtain y of t as 1 minus e to the power minus t, and this is valid when t is greater than 0। ठीक है, t greater than 0 पर ही मेरा एरिया ओवरलैप करता है। So now we have y of t which is equals to 0 when t is less than 0, because there is no overlapping region for t less than 0। लेफ्ट शिफ्ट करने पर कोई मेरा रीजन ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर इज 0, एंड इट इज इक्वल्स टू 1 minus e to the power minus t if t is greater than 0। So this will be the output of the convolution of x of t and h of t। Thank you.